वीडियो चाहिए क्या? मेरा वीडियो पता नहीं, देखो, बिकॉज आज कुछ भी बैकग्राउंड नहीं होगा। आई हैव टू फिक्स ऑल ऑफ दोज थिंग्स, तब मिलेगा कुछ। शुरू करते हैं बच्चा लोग। सो लेट अस स्टार्ट आवर क्लास देन। ऑलराइट, so as I've told you, on Saturday we are going to write a test. Like we are going to discuss some kinematics questions, right? We agreed to that point. So let us start the class then. शुरू करें फिर बच्चा लोग। So are you ready? अच्छा, how will you write the test? कैसे लिखोगे? So you have to be ready with a pen and paper. All right, write question number, and as soon as I show you the question, you have to solve it, and in a particular time interval, like you have to solve it and give the answer. If I say stop, then you have to stop. You can't actually change your answer. You can't actually change any of your responses. You have to be very, very honest with yourself. It's not like someone will be watching you. It is a test of physics as well as your honesty. ठीक है ना? तो आपको बिल्कुल honest होना पड़ेगा, and then only you can actually introspect कि what are the things that actually you miss out or you commit mistake in. ठीक है? तो शुरू करते हैं चलो इधर। So let us start with the first question. This is the question number 1. Alright guys, तो ये हुआ हमारा आज का पहला सवाल। Your options will be there, and I'll be launching a poll as well. Alright guys, so I'll be giving you 1 minute for this, and the poll has been launched, so you have to answer it within a minute. I'll end the poll after 60 seconds. Guys, please message me on the host account if you're messaging me, okay? Please don't message me on the co-host account. I won't be able to read that. Question is, if particles velocity at a is equal to plus 4 meter per second, then which of the following options, which one of the following options is correct? 30 seconds left. Time t is equal to 0 at some time t. Okay? Initial position, final position. So tell me, what is displacement here? Displacement is positive, negative, velocity is positive, negative, or none of the above. Which is the correct answer? Chalo bachcha, so time's up. Stop giving your responses. So whatever the answer that you have marked, be ready to face the correct answer. Okay? Chaliye. So if you'll get the correct answer, you have to give yourself +4. If you're getting a wrong answer, you have to give yourself -1. If you couldn't attempt in particular time in 1 minute within time frame, then you have to give 0 mark to yourself. All right? Chaliye. So what is the correct answer then? देखो अच्छा, if particles velocity at a, this is point A, is plus 4 meter per second, what does that mean? Plus क्या बताएगा? We are talking about velocity which is a vector quantity. Correct है? Which is a vector quantity. If this is a vector quantity, that means this plus or minus sign will suggest the direction. It is moving towards left. That means I have considered, if you mark this, it means this positive sign means that we have considered leftward as positive direction. क्या माना मैंने? Leftward as positive. तो leftward direction has been considered positive. Okay? चलिए, तो आगे बात करते हैं फिर क्वेश्चन में क्या है भाई? So what is displacement? Whether displacement is positive or negative. So what is the initial point? This is the initial point. What is the final point? B is the final point. So what will be the displacement? Final position minus initial position. How will you represent that as a displacement vector? So the head should be at the final position and tail should be at the initial position. So this is the initial position, this is the final position. Join them. Head should be at final position. So this will represent the displacement vector. This will represent the displacement vector. This displacement vector is towards right or left? It is towards right. But rightward is positive or negative? Rightward direction is positive or negative? According to this question, according to this convention, rightward will be negative because leftward is positive. Because leftward is positive. So what is the answer, bacha? Displacement here is negative. Displacement here is negative. So option C is the correct answer. Only 8 of you have got the correct answer. Only 23 of you have voted out of 23. Only 8 of you have got the correct answer. ठीक है? अच्छा, समझ में आया सबको? Guys, am I clear to all of you? Do you have any doubt? Did you understand the concept which has been used here?
Guys, please do click yes if you have understood this. ठीक है? If you have any doubt, if you need any clarification, let me know. Don't ask me to repeat. Just be very very specific. ठीक है? क्या problem है? Otherwise, I won't be able to solve all the questions in this class. It's a kind of live test, right? चलिए. So option C is the correct answer. Those who have got, only 8 of you have got the correct answers. Those 8 of you have got the correct answer, +8. Sorry, +4. And rest all of you -1 or 0. Okay. Chalo. Second question related to this diagram only. Second question. Okay. Again, I'll give you 1 minute for this. 60 seconds. You have to solve this within 60 seconds. Come on, guys, solve it fast. Jaldi jaldi solve karo. So during leftward motion, speed must have increased. First option. Particle must have come to rest during A to C to B motion. A to C to B, like in this direction, particle must have come to rest. Okay, at a point. Speed must have increased during A to C to B. That means when particle was moving from A to C to B, then speed must have increased. Fourth option, since acceleration is positive, hence speed must be increasing. So which one of them is correct? चलो बच्चा लोग जल्दी से चीते का स्पीड दिखाओ बिल्कुल। आज शेर बनने की जरूरत नहीं है, आज आपको चीता बनना है। ठीक है? So give me the correct answer. Yes, stop. Try to avoid any silly mistakes. If you are like committing some mistakes with the kind of your concept गलत यूज किया, ठीक है, but silly mistakes बिल्कुल मत करना. Alright guys, so 60 seconds over. So within 60 seconds, only 28 of you have answered it. Guys, stop responding. This is it. If you couldn't solve it, mark yourself 0. आप अपने आप को 0 मार्क दो अभी. ठीक है? If you have attempted this, if you have given some response, wait for the correct answer. Once I'll give you the correct answer, give yourself +4. Otherwise, give yourself -1. All right? चलिए. So during the leftward motion, speed must have increased. Guys, tell me whether it is correct. During leftward motion, speed must have increased. Is it correct? No. Why? How do you check whether speed is increasing or decreasing? बोलो बच्चा लोग. How do you check whether speed is increasing or decreasing? जल्दी जल्दी बताओ बच्चा लोग. कैसे पता करते हैं? If direction of acceleration and direction of velocity are same. Very good आशुतोष, very good प्रियदर्शनी and प्रतीश. कैसे मालूम करते हैं? If A and V have the same sign, then speed increases. If A and V have opposite sign, then speed will decrease. So during leftward motion, direction of motion is nothing but direction of velocity, right? Acceleration is towards right, velocity is towards left during leftward motion. So they are in opposite direction, so their signs are opposite to each other. So speed must have decreased during leftward motion. So option A cannot be the correct answer. What about option B? Particle must have come to rest during ACV. How do you identify whether particle will come to rest during a particular motion or not? For that, if this block has some velocity, for this speed to cease to 0, क्या होना चाहिए? Acceleration must be in opposite direction. So when particle is moving from A to C to B, that means particle's velocity is towards rightward, acceleration is also towards rightward. That means speed will never become 0. The particle will never come to rest during the rightward motion. So option B is also what? Not correct. What will happen during rightward motion? I can simply say, since speed is toward during rightward motion, I'm talking about during rightward motion. That means direction of velocity is nothing but towards right. Acceleration is already towards right. That means the speed will increase in rightward motion. Okay? When particle is moving in rightward direction, what must have happened to the speed? Speed must have increased. Let us come to C. Speed must have increased during A to C to B. That means option C is what? The correct option. Fourth one is थोड़ा सा intriguing, थोड़ा सा intimidating है, थोड़ा deep. Fourth one. Whether fourth one is correct or not. देखो. Since acceleration is positive, hence speed must be increasing. Guys, is it correct? Can you decide about change in speed by looking at the sign of acceleration itself? Tell me, guys. Can you decide the change in speed of a particle by looking at the direction or the sign of acceleration only? Answer is no.
Positive acceleration doesn't mean speed will always increase, or negative acceleration doesn't mean speed will decrease always. ठीक है, हमेशा याद रखना. What is difference between negative acceleration and retardation or deceleration? बोलो बच्चा. और retardation बोलो. What is difference between negative acceleration and retardation? क्या difference है दोनों में? नेगेटिव एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या है बच्चा लोग, जल्दी से बताओ. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. these concepts actually confuse a lot of student. नेगेटिव एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन? मैग्नीट्यूड आल्सो डिक्रीज इन रिटार्डेशन. अच्छा, डायरेक्शन इज नेगेटिव, रिटार्डेशन अपोजिट टू वेलोसिटी. नो, देखो, नेगेटिव एक्सेलरेशन का सिर्फ और सिर्फ यही मीनिंग है दैट द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन is opposite to the positive assigned direction or assigned positive direction. ठीक है, opposite to the assigned positive direction. If rightward is considered positive, then negative acceleration means acceleration is in leftward direction. ठीक है, so negative acceleration is nowhere related to direction of velocity. इसको कोई लेना देना नहीं है velocity का क्या direction है, किससे लेना देना है बच्चा लोग. If we have considered rightward as positive and if I'm saying acceleration is negative, that means acceleration is towards left. This is the meaning of negative acceleration, that's all. अच्छा, what about retardation? Is it same or different? तो this is different. तो retardation क्या है बच्चा, या deceleration क्या है बच्चा? So retardation means direction of acceleration is opposite to the direction of velocity. ये connected है direction of velocity से, ठीक है ना. So what is retardation बच्चा लोग? Retardation is what? An acceleration which has the direction opposite to the direction of velocity. Will this decrease speed? बोलो बच्चा, will this acceleration decrease speed? तो answer is yes, it can, it may. But negative acceleration, does a negative acceleration mean speed will always decrease? Answer is no. ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना आप इस चीज को. दिस इज इंपॉर्टेंट बच्चा लोग, एंड प्लीज रिमेंबर दिस पार्ट वेरी वेरी केयरफुल. ऑलराइट, सो यहाँ क्या लिखेंगे? स्पीड मे और मे नॉट डिक्रीज. बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रिटार्डेशन? इसका मीनिंग क्या है बच्चा? इसका मीनिंग है स्पीड डिक्रीजेस. ऑलराइट, इस चीज को प्लीज हमेशा याद रखना. ओके, चलिए. तो सिंस एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, दैट डजंट मीन दैट स्पीड मस्ट बी इंक्रीज. का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है. आप यहां देख भी सकते हो कि वेलोसिटी क्या बच्चा? पॉजिटिव इज टुवर्ड्स लेफ्टवर्ड. Anyway, first of all, the acceleration is not positive in the question. Acceleration is already a negative here because we have considered leftward as positive and acceleration is in rightward direction. So first of all, acceleration is not positive at all in this condition. Acceleration is what? Negative. So option जो हमारे पास D है वो तो multiple grounds पे गलत है, right? पहला तो ये अगर पॉजिटिव होता भी तब भी कोई जरूरी नहीं. सेकंड, दिस इज नॉट पॉजिटिव एट ऑल इन दिस कंडीशन. So at multiple grounds, this statement is actually a wrong statement. Guys, please click yes if you have understood this. And to a surprise, only 5 of you have got the correct answer out of 28 votes. Out of 28 of you who have actually responded to this question, only 5 of you have got the correct answer. Think about the minuteness, think about the basic conceptual clarity of this chapter of this concept. Only 5 of you have got the correct answer. Only 5. समझ में आ रही है बात? इसी चीज को ध्यान देना है काइनेमेटिक्स में. It is very very easy chapter, but it's very 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 basic. आपको बेसिक चीजों को एकदम पकड़ के रखना है. ओके, चलिए आगे बढ़ता हूं बच्चा लोग, ठीक है. Let us now move on to the third question. प्रशांत, mark yourself 0, ठीक है. Let us move on to third question. चलो, थर्ड में ये है. And guys, I'll be giving you only 40 seconds for this.
I'll be giving you only 40 seconds for this. You have to answer this question within 40 seconds. Question number 3 has to be answered within 40 seconds. And guys, please don't guess. I request all of you, please don't guess. It's always good to get 0 mark, but it's always foolish, dumb idea to get negative marking. And it's the dumbest idea to get a positive mark after guess. ठीक है? Believe me, मैं जो बोल रहा हूं बिल्कुल सही बता रहा हूं. चलो बच्चा, only 5 seconds are left. चलो 5 सेकंड और देता हूं, जल्दी से आंसर करो. I have given you actually 50 seconds. Stop. So within 50 seconds, only 28 of you were able to vote. Guys, stop giving yourself responses. Khatam, kahani khatam. Don't mark your options, mark your responses if you have given answer after this. Okay? That's it. Abhi sirf answer verify karoge. Because this is extremely easy question. You should be able to answer it within 30 to 40 seconds. ठीक है ना? चलो देखिए. Don't say sir question पढ़ने में ही चला जाएगा time. No. To read this question will need 20 seconds. You'll get the answer एकदम बिल्कुल फास्ट तरीके से. ठीक है? देखो क्या है. A cart runs at constant speed on a circular track. No problem sir. Circular track है, उसमें run कर रहा है. Radius is given to us. Taking 62.8 seconds on each lap. What is the average speed and average velocity on each complete lap? So what is the average speed we have to find and what is the average velocity we have to find? बच्चा लोग बताओ, what will be the average velocity? First of all, tell me, what will be the average velocity? What will be the average velocity? Each lap में, एक complete करने में average velocity क्या होगा? 0. Because net displacement will be what? 0. If you complete one circle, you are again coming to the initial point, right? So initial point is coinciding with the final point, so displacement will be 0. So velocity must be 0. देखो इसमें थोड़ा सा परेशानी क्या है? पूछा है average speed पहले, बाद में average velocity. But in the options, they have given velocity first and speed बाद में, right? तो पहला point होना क्या चाहिए सर? तो velocity will be 0. तो either B or C, no problem. But we know that can average speed be 0 if there is a motion? बोलो बच्चा, can average speed has a value 0 if particle is under motion? Answer is no. So we can't have average speed as 0. So option B is the correct answer. Do I need to calculate whether speed is 10 or 20? मेरे को फर्क नहीं पड़ता, यही करेक्ट आंसर था कि नहीं था 30 सेकंड्स का. बच्चा लोग, लेट मी नो वेदर दिस वाज अ टफ क्वेश्चन और इजी वन. 30 सेकंड में क्लियर होता कि नहीं होता, बताओ जल्दी से. It is based on the concept average velocity and average speed. And don't think that this question cannot be asked in your examination. पूछा गया है, बार बार पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन. ठीक है? चलिए, so what is the correct answer for this? Option B, which 19 of you have got the correct answer out of 28. That is quite impressive accuracy. अभी बहुत अच्छा आप लोगों ने लिख लिया है actually. ठीक है? So 19 of you have got the correct answer and the rest 9 of you have got incorrect answer और बाकी लोगों ने आंसर नहीं कर पाया. ठीक है? चलिए, नो प्रॉब्लम बच्चा लोग, आगे देखते हैं. 4th क्वेश्चन देखते हैं. अगेन दिस क्वेश्चन I'll give you 1 minute for this. ठीक है? I'll give you 1 minute for this. चलो बच्चा लोग जल्दी से आंसर करो. Come on guys, you can do it. जल्दी से आंसर करो. I have included 16 questions. You will be able to complete 16 questions within an hour. मैं 1 घंटे बाद ही छोड़ दूंगा. Don't worry. It all depends on you कि कब तुम खत्म करते हो सारे questions को. Come on guys, please answer this fast. Ten seconds are left. Only 10 seconds are left. Done. Time's up. 37 of you were able to answer this. So what is the correct answer बच्चा लोग? तो देखते हैं. So particle has a velocity u towards east. क्या है बच्चा लोग? Particle का velocity किधर है? Towards
ईस्ट, तो ये मान लो ईस्ट की तरफ गया, ठीक है, दिस इज द वेलोसिटी u at t is equal to 0. Its acceleration is towards west. Acceleration किधर बच चलो, west की तरफ, and is constant. No problem. Let xa and xb be the magnitude of displacement in the first 10 seconds and the next 10 seconds. That means in first 10 seconds, what is the displacement? That is xa. In next 10 seconds, what is the displacement? That is xb. Okay. You have to compare the relation between xa and, like, you have to compare xa and xb. That means you have to find the relation between xa and xb, which one of them will be greater and which one of them will be smaller. तो क्या करेक्ट आंसर होगा बच्चों? देखो, to know about what is the relation between xa and xb, I have to know when the particle will come to rest. क्यों? सिंपल सी बात है, because from this data I can say particle will move in this direction and then will come to rest at a point and then starts moving towards west. ठीक है? So we don't know at which point this particle will come to rest because we don't know what is the value of u here. मुझे पता ही नहीं है u कितना है. Do I know what is the value of u? I don't know. Do I know when the particle will come to rest? No. Whether this 10 second, first 10 second will be within this region or the particle will come to rest before 10 second, we don't know. मुझे कुछ नहीं पता है, सिर्फ मुझे पता है कि you say मतलब that they are going to what, the particle is going to move like this, then actually revert its direction. That's it. So you can't actually relate xa and xb here. So correct answer for this question will be option D. Only 7 of you have got the correct answer for this question. सिर्फ 7 लोगों का correct answer आया है. अच्छा, now there is a catch here. Catch क्या है? मतलब चोर पकड़ना है. हमने 30 चोरों को पकड़ा है. कैसे? I have caught 30 thieves. कैसे बच्चा? तो देखो सिंपल सी बात है. Guys, first of all, if you are going for option A, B or C, that means you have not calculated the value. You have not get the relation actually using any mathematical equation. You must have thought ऐसा होता होगा, ऐसा होता है, दिस इज व्हाट हैपेंस. ठीक है, तो मैं कहता हूं फिजिक्स में जो लगे कि ऐसा होता है, फिजिक्स में वैसा होता नहीं. ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो जब भी कभी लगे, अंदर से फीलिंग आए ना ऐसा ही होता है, समझ लेना वो कभी नहीं होगा, गलत ही होगा. Am I clear to all of you? जो ऑप्शन तुम्हें सबसे पॉपुलर लगे, सबसे ज्यादा इंट्रिगिंग लगे, उस ऑप्शन को टिक करना ही मत अगर गेस कर रहे हो तो. If you have no idea about the concepts to be used, if you have no idea about the concepts to be used, if you don't know how to solve it, and if you feel that this option looks very, very familiar to me, that means you are thinking about a question which is not related to it, and there the relation B was actually very, very familiar, or you must have used it. जब तक आपको एक मैथमेटिकल इक्वेशन ना मिले तब तक कोई भी इंट्रीगिंग इंटिमिडेटिंग ऑप्शंस को करेक्ट मत मानो. डोंट डू दैट. आई एम श्योर नन ऑफ यू हैव गॉट ईदर ए, बी और सी एज द ऑप्शन बिकॉज तेरे पास कोई डेटा ही नहीं है, बट स्टिल यू हैव गॉन फॉर ऑप्शन ए, बी एंड सी. 30 ऑफ यू, that is very high number, right? So it's not about testing your kinematics concepts, it's about testing your patience, whether you know how to deal with the time frame, whether you know how to deal with easy questions, whether do you have that urge, do you have that particular capacity to stop the urge of answering each questions. अगर तुझे नहीं समझ में आ रहा है, आंसर नहीं करूंगा मैं. देखो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, either I'll figure it out कि मेरे से होगा ही नहीं, like I'm confirmed about this, or second option is I will not answer this question at all. It doesn't matter how easy the question looks like. ये हमेशा याद रखना एग्जामिनेशन में. इफ यू आर अ स्टूडेंट हु कैन एक्चुअली स्कोर गुड मार्क्स, दिस क्वेश्चन, दिस पर्टिकुलर लर्निंग इज फॉर यू. If you can score 550 plus in NEET examination, and if you can score more than 50% in JEE examination and test series, and if this kind of question is being asked to you in any of the JEE or NEET examination, please remember this part. क्या remember करना है? Whenever you are not confirmed, if you think of okay, out of these three, one of the option is very, very intimidating, but I'm not sure about it, but this question is very easy, then your ego will come. कैसे छोड़ दूं इसको, ये बहुत आसान है, यही होगा यार. The moment this kind of feeling will come to you, like leave this question. This is the best idea, this is the best thing that you can do. It doesn't matter how easy or how tough
the question is or which kind of question you're leaving. It's always about the final mark that you're getting. तो इस चीज को हमेशा याद रखना, ठीक है? इजी छोड़ा, टफ छोड़ा, समझ नहीं, मेरे को दिमाग नहीं लगाना है, मुझे +4 पे फोकस करना है और आई हैव टू अवॉइड दैट -1. All right guys, so I hope you have understood this. Anyway, this question was very easy, but still this question was added to make sure that you guys should understand this particular trick or this particular learning कि करना क्या है तुम्हें examination. Guys, please click yes if you have understood till 4th question, if you have got all the things that I have told you today. If you need any clarification, please let me know. Otherwise, I'll go to the 5th one. Clear है सबको? चलिए, now let us move to 5th question then. इसका आंसर करो जल्दी से. I'll give you 90 seconds for this. However, this doesn't require 90 seconds, but I'll give you 90 seconds for this. जल्दी आंसर करो बच्चा लोग, चीते की स्पीड में. Come on बच्चा लोग. A body of mass 1 kg is acted upon by a force F is equal to 2 sin 3 pi t I cap plus 3 cos 3 pi t j cap. बाकी आप क्वेश्चन आराम से पढ़ ही सकते हैं. Come on guys, 45 seconds left. Guys, 10 seconds left. No Mohit, ध्यान से देखो. All right guys, it's time's up. चलिए, only 26 of you were able to get some answers. No Mohit, option B and C are not same. Look at the options properly. यहाँ देखो 3 pi square है, यहाँ 3 pi है. How can you say they are same? अखियों से गोली मारे. ठीक है ना? चलिए तो देखते हैं, मतलब सॉल्व करते हैं इसको. ऑलराइट, सो अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, ठीक है, अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स. दिस वन, फोर्स इज व्हाट हियर? कांस्टेंट और वेरिएबल? टेल मी गाइस, हियर फोर्स इज कांस्टेंट और वेरिएबल? वेरिएबल. फोर्स इज व्हाट? डिपेंडेंट ऑन टाइम, है ना? तो एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट और वेरिएबल, तो एक्सेलरेशन विल बी वेरिएबल. Can you use this equation of motion? Answer is illa. No, you can't use equation of motion. तो जो भी अपना equation of motion रट्टा मार के एकदम यूज करने के लिए आप रेडी थे, तो उनके लिए क्या है, ये शॉकिंग न्यूज है. आप यहाँ पे equation of motion यूज नहीं कर सकते. ठीक है, तो हमेशा लोगों में ये like everyone, like most of the students have this urge to use equation of motion everywhere. ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान से देखना है. करना क्या है? Find out, figure out whether acceleration is constant or not. Here acceleration is not constant. Force is given to us which is dependent on time, so we have to consider acceleration will also be dependent on time. That means acceleration will not be constant, so we can't use equation of motion. चलो find out करते हैं कैसे निकलेगा. So here acceleration will be equal to, let me break this into two components. ठीक है, तो ax क्या हो जाएगा बच्चा लोग? 2 sin 3 pi t. ay क्या हो जाएगा बच्चा लोग? तो ये I cap है. ऑलराइट, सॉरी फॉर दिस टेढ़ा मेढ़ा. ऑलराइट, ay कितना है बच्चा लोग? तो 3 cos 3 pi t j cap. ऑलराइट, ये मिला मुझे ax और ay. अच्छा, व्हाट अबाउट द क्वेश्चन? तो क्वेश्चन क्या है? वी हैव टू फाइंड इट्स पोजीशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड. इफ एट t इज इक्वल टू 0 इट इज एट रेस्ट एंड एट ओरिजिन. इसका मीनिंग क्या दिया इसने? इसने बोला एट t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल वाज एट 0 एंड द वेलोसिटी वाज आल्सो 0. ठीक है बच्चा लोग, मतलब v भी 0 है, मतलब ux और uy दोनों ही क्या है? 0 है एट t इज इक्वल टू 0. इनिशियल कंडीशन इज गिवन टू अस.
Question is we need to find position at t is equal to 1 second. How can we find position at t is equal to 1 second? Simple सी बात है. I need to know what is the relation between position and time. I need to know what is the relation between position and time. I'll put the value of t as 1. I'll get the value of position. Right? देखिए, तो since we are talking about x and y direction, so we have a position. We'll have position in two directions, x and y. तो how will you get x as a function of t? How will you get y as a function of t? है ना? तो शुरू करते हैं. तो I can write this d मतलब ax as dvx by dt है ना. तो I'll let dvx by dt will be written as 2 sin 3 pi t. Let me just get rid of that I cap को अभी के लिए साइड करके रखता हूँ. ठीक है. So I'll get vx will be equal to integration of 2 sin 3 pi t. यही होगा ना बच्चा. यस, वेरी गुड रक्षिता, वेरी गुड विश्रुत, करेक्ट है प्रतीश. तो यहाँ क्या मिल जाएगा बच्चा लोग? सो 2 into cos of 3 pi t divided by 3 pi with a minus sign. कहां से कहां इंटीग्रेशन बच्चा लोग? तो यहाँ हो गया 0 to t. ऑलराइट, इधर क्या मिल जाएगा बच्चा लोग? तो vx 0 to let's say vx. ओके, तो ये मिल जाएगा मुझे vx will be equal to 2 divided by 3 pi into cos of 3 pi t. इसको क्या किया मैंने, कहां से कहां? 0 to t, तो -1. ये पार्ट मुझे मिला vx का विद अ नेगेटिव साइन, नो प्रॉब्लम. 1 भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम प्रणव. बट मैं t इज इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूं. मैं क्या कर रहा हूं? t इज इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूं. बाद में x एज अ फंक्शन ऑफ t मिलेगा. अरे प्रणव, थिंक अबाउट इट बच्चा. इफ यू पुट 1 हियर, बाद में इंटीग्रेट किसको करोगे? Will you integrate constant? And will does that mean velocity is constant? करना क्या चाहते हो तुम? तुम्हें x as a function of time चाहिए ना. अभी you can't put. If you put it, you'll get velocity at t is equal to 1 second. You can't differentiate or integrate that part. ठीक है? वो फिर आपको गलत कहानी बताएगा. चलिए, similarly I'll get this vy is equal to क्या मिल जाएगा बच्चा लोग? तो 3 divided by 3 pi into cos 3 pi t minus 1 with a minus sign. ऐसा कुछ मिलेगा बच्चा लोग. So I'm not going to integrate it again. उधर वाला यही पार्ट को मैं इधर लिख रहा हूँ. ठीक है. After doing this, you'll get the same kind of equation. इस तरीके का इक्वेशन वहां मिलेगा. Now you have to write this vx as dx by dt. यहाँ लिखेंगे, right? क्या हो गया? अच्छा, this is cos, so this will become sin. Correct. This is cos, so this will become sin. And integration of cos is what? Sin only. Correct है ना? That is true. That is true. I didn't see that. That was cos. तो ये क्या मिल जाएगा? Sin. No problem. Thank you. चलिए, अब इसके बाद क्या करना है? अब इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे. तो dx by dt is this one, right? So if I write the dx value, if I integrate this, I'll get x will be equal to, तो यहाँ क्या मिल जाएगा? 2 divided by 3 pi. Integration of cos into sin. ठीक है? तो इंटीग्रेशन ऑफ cos क्या हो जाएगा? sin हो जाएगा. तो sin 3 pi t. And then integration, differentiation of this का division. So this will become 3 pi का whole square. All right? ठीक है बच्चा लोग, क्लियर है? एंड देन क्या मिल जाएगा बच्चा इधर? -1 का t. क्या मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या? फिर यहां क्या लिमिट क्या मिलेगा बच्चा? लिमिट विल बी व्हाट? लिमिट विल बी फ्रॉम 0 to, लिमिट विल बी फ्रॉम 0 to. ऑलराइट, क्लियर है? गाइस, लेट मी नो इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस x part. Do you have any doubt? विजय, क्या हुआ? ब्रैकेट करेक्ट है ना? विजय, यू आर राइटिंग समथिंग, कुछ तो ब्रैकेट लिख रहे हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? माइनस साइन रहेगा. ओके, नो प्रॉब्लम. vy का से क्या निकलेगा? y मिलेगा. तो ट्राई टू फाइंड आउट y. y क्या मिलेगा बच्चा लोग? तो इंटीग्रेट करेंगे इसको, क्या मिल जाएगा? 3 divided by 3 pi का होल स्क्वायर. ऑलराइट, 3 pi का होल स्क्वायर. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट, साइन का क्या मिल जाएगा? माइनस कॉस. ऑलराइट, नो, या देयर इज अ मिस्टेक दैट आई हैव कमिटेड. या देयर इज अ मिस्टेक. x इज आल्सो गलत बच्चा लोग. x इज आल्सो रॉन्ग. कैन यू फिगर आउट दैट पार्ट? दिस इज आल्सो रॉन्ग.
अभी तक किसी ने पकड़ा नहीं है। ये तो वी वाई छोड़ दो गणेश, फॉरगेट अबाउट दिस वी वाई फर्स्ट। पहले बताओ एक्स में क्या गलती है? लिमिट केस। लिमिट में क्या प्रॉब्लम है? देखो गलत यहां है, देखो दिस विल बी 3 पाई, ऑलराइट, एंड देन इफ यू इंटीग्रेट दिस पार्ट, इसको ऐसे रखो, इफ यू इंटीग्रेट दिस पार्ट यू विल गेट हियर 3 पाई। डिड यू गेट दिस? कहां मिलेगा 3 पाई? 3 पाई विल बी हियर, नॉट एग्जैक्टली आउट ऑफ द ब्रैकेट। नो प्रतीश, ध्यान से देखो, integration of this will be sin 3 pi t divided by 3 pi, right? Got the point, Pritesh? Integration of cos 3 pi t will be equal to sin 3 pi t divided by 3 pi। ये यहां मिलेगा, इसको बाहर में तब लगाते ना जब इधर भी होता। and integration of 1 will be what? t। कहानी खत्म। अच्छा इसको इंटीग्रेट करो। गणेश वाज सेइंग समथिंग अबाउट वी वाई, क्या प्रॉब्लम है वी वाई में बच्चा? यस, तो यहां पे 1 नहीं मिलेगा, दैट इज ट्रू। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस विल बी क्या बच्चा? साइन। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस विल व्हाट? साइन। तो sin 3 pi t if you write and if you put the value 0 to t you won't get -1, you'll get simply this, that is true, no problem। ठीक है, वेरी गुड गणेश, बहुत बढ़िया। चलिए अभी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो इसका इंटीग्रेशन विल बी हियर, तो 3 पाई स्क्वायर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, cos 3 pi t 0 to t, ओके 0 to t, एंड दिस विल बी व्हाट? करेक्ट विद अ माइनस। गाइस क्लिक यस इफ यू हैव अंडरस्टूड टिल दिस पॉइंट। यहां तक अगर चीजें समझ में आई तो प्लीज क्लिक यस। एनी डाउट? कोई दुख दर्द? क्लियर है? चलिए तो अब बताइए बच्चा लोग, x at t is equal to 1, y is wrong, I feel so sir, again y is wrong, y is wrong, क्या दिक्कत है y के wrong में? अभी तो मुझे सही लग रहा है, अभी तो कुछ गड़बड़ नहीं है। गणेश अभी y में क्या प्रॉब्लम है? या सो व्हाट, t इज इक्वल टू 0 में y 0 है तभी तो ना, dy को मैंने इंटीग्रेट किया, आई विल गेट y and then 0 to y, so y minus 0 will be this। I have not given the value to the limit ना, यहाँ पर माइनस में आएगा ना उधर, ठीक है ना गणेश? चलो अब वैल्यूज पुट करके देखते हैं क्या करेक्ट आंसर मिलता है। ओके नाउ x at 1 तो -2 डिवाइडेड बाय 3 पाई into sin 3 पाई क्या होता है बच्चा लोग? when you put t is equal to 1 this will become 3 पाई, sin 3 पाई क्या होता है बच्चा लोग? 0 माइनस, ऑलराइट, ये पार्ट मिला, माइनस 0 पुट करो तो 0 माइनस 0, नो प्रॉब्लम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। दिस इज द वैल्यू फॉर x at 1। तो क्या आंसर मिला बच्चा लोग? एंड डिवाइडेड बाय 3 पाई, सो आंसर इज व्हाट? +2 डिवाइडेड बाय 3 पाई का होल स्क्वायर। ऑलराइट, व्हाट अबाउट y at 1? व्हाट अबाउट y at 1? बोल बच्चा, व्हाट अबाउट y at 1? तो इसका वैल्यू पुट करेंगे तो -3 डिवाइडेड बाय 3 पाई का होल स्क्वायर इनटू cos 3 पाई माइनस cos 0। क्या आंसर मिलेगा? इधर क्या हो जाएगा? -3 इंटू cos 3 पाई इज -1, माइनस ऑफ cos 0 इज 1, तो ये मिला -1 डिवाइडेड बाय 3 पाई का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या मिल जाएगा बच्चा? 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, I can cancel this and I can write this as 3 pi square root and the final answer will be minus minus क्या हो जाएगा? प्लस, तो 2 divided by 3 pi square। तो which is the correct answer according to this? Come to this। तो x क्या मिलना चाहिए बच्चा लोग? What should be the value of x? X should be, if you write it properly, you'll get 2 divided by 9 pi square,
and y should be equal to 2 divided by 3 pi square. None of the above. So what is the correct answer बच्चा लोग इसमें? What is the correct answer? Correct answer is none of these. Only 6 of you have got the correct answer, but I don't know whether you have got the correct answer or they have guessed it. Guys, click yes if you have understood this. If you have any doubt in this one, please let me know. अरे ये सॉल्व जब करोगे ना, मैंने सॉल्व किया ना, if I'll be solving this for examination, I won't be taking that much of time. मैं ये सारी चीजें नहीं लिखूंगा बार बार. बात समझ में आ रही है विजय? I have not given you 1 minute. I have given you 90 seconds. I have given you 90 seconds, not 60 seconds. I have given you 90 seconds. When you will be solving this, you won't be writing this every time. All this ना, वो क्या साथ में चलता जाएगा तुम्हारा. इंटीग्रेट करना है बच्चा. साइन का माइनस कॉस पुट करते जाओगे, आंसर मिलते जाएंगे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा लोग सॉल्व करो. Sixth one guys, you can take 90 seconds, 100 seconds, take 100 seconds, no problem. Come on guys, get the correct answer for this one. Forgot the bracket, okay, no problem. Come on guys, try to get the answer for this one. A particle is projected vertically upward from point A on the ground. It takes t1 time to reach a point B, but still continues to move up. If it takes further t2 time to reach the ground from point B, then height of point B from the ground is. 60 seconds are left. चलो बच्चों लोग जल्दी आंसर करो. Twenty seconds are left. Only 20 seconds are left. All right, time's up. So 30 of you have answered. Very good बच्चा लोग. Guys, stop responding. बंद करो. जो जितना आंसर आया अदरवाइज स्टॉप राइटिंग, स्टॉप सॉल्विंग आल्सो. ओके, चलिए तो अब मैं सॉल्व करता हूं एंड लेट अस वेरीफाई दिस. कितने लोग का करेक्ट आंसर आया? ओके, बहुत कम लोग का, आई थिंक सो. अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम अ पॉइंट ए है, और ये क्या बच्चा, मान लो वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन. दिस इज पॉइंट ए. Okay, it takes time t1 to reach a point B, but it still continues to move up. That means B is what? Somewhere here before the maximum point. All right, so from A to B time taken is what? t1. After it says if it takes further t2 time to reach the ground from point B, तो B के बाद क्या करेगा? B के बाद it will go up, reaches maximum, and then what? It will come down to the same point again. So I'm just replicating the line of motion with a different line just to avoid the mixing apart. ठीक है, तो मैं क्या अलग लाइन दिखा रहा हूँ. If this is point M, this is also point M. This is what? Point A. Same line. Okay. If I'm saying this is M, this is M, this is A, this is A, that means I'm talking about the same line, but two different lines have been considered just for sake of simplification. Okay. तो यहाँ से यहाँ from B to A, the time taken is what? It means yellow color. From here to here, the time taken is t2. ये दिया हुआ है. All right. So we need to find what is the height of B from the ground. तो ground से कितने height पे B point है? तो कैसे निकलेगा बच्चा ये? If I have to find the value of h from here,
I know only t1. How will you find that? Acceleration is constant, so you can use s is equal to ut plus half into at square. T is known to us, a I know. Once I know the value of u, I can solve it. So our aim should be to find what is the velocity of the particle at point A, है ना? तो A पे मुझे velocity मालूम करना है, कैसे निकलेगा? तो there is one condition that is given to us. The total time, देखो क्या है? Few of you might get this kind of feeling that sir B से यहाँ तक कुछ कर लो, ठीक है? But मैं क्या कहता हूँ? I will try to eliminate, I'll try to make this question in such a way that I'll try to get an information in such a way that informations are limited, मतलब कम information रहे मेरे पास, right? तो what will I do? Or I'll get something कुछ को zero का कुछ आंसर मिल जाए. क्या करेंगे बच्चा? If I consider the full motion, ठीक है? अरे अंकिता, अगर वेलोसिटी जीरो हो गया बच्चा, तो पार्टिकल ऊपर जाएगा ही नहीं. बच्चा देखो मैं क्या कर रहा हूं, आई विल कंसिडर a to m to a वाला मोशन. आई एम कंसिडरिंग फुल मोशन. इन दिस पर्टिकुलर मोशन टेल मी व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन बच्चा. तो आई विल से t1 plus t2. देखो कैसे जादू दिखेगा अभी आपको. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग दिस? तो जीरो. देखो मजा आया क्या? एक्सेलरेशन तो g के बराबर है ना. तो हम क्या करेंगे कि दैट s विल बी इक्वल टू ut plus half at square, and see how this equation will be so simple to analyze. कैसे बच्चा? Let me add a page here. अगर मैंने ये कर दिया तो देखो s is 0, what is u? Unknown to us. What is t? तो t is t1 plus t2. What is acceleration? बोलो बच्चा, what is acceleration? During this what will be the acceleration? Plus g or minus g? ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं. What will be the acceleration, plus g or minus g? How will you decide? कैसे डिसाइड करते हो? तो एक डायरेक्शन को कंसीडर वन ऑफ द डायरेक्शन एज पॉजिटिव, नॉट ऑलवेज प्रतीश, नॉट एट ऑल. You have to decide which direction will be positive in your question, in your solution. मैंने क्या किया? When I am saying u is positive, that means u will be in upward direction. That means I have considered upward as positive. It's as simple as that. I have written simple u, not minus u. What does that mean? उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग ये है that I have considered upward as positive direction in this solution. ठीक है? तो the moment I'll consider upward as positive, all the vector quantities which are in downward direction will be considered negative, and acceleration will always be downward. So here acceleration will be negative. So I'll write minus half g t1 plus t2 का whole square. तो यहां से मुझे u क्या मिलेगा बच्चा? u will be g by 2 t1 plus t2. एक t1 plus t2 कैंसिल हो जाएगा, राइट? I got the value of u. देखो अब जादू मिल जाएगा. अब क्या बोलेंगे बच्चा? Now I'll write AB length will be equal to h value, and this will be equal to ut plus half at square. तो u into t1. T1 is what? The time. u into t. A to b में टाइम कितना लगा बच्चा? t1. So I'll write u into t1. Correct? Plus half into acceleration, again minus, because I have taken upward as positive, so minus g into t1 square. Now put the value of u. U is nothing but g by 2 into t1 plus t2. If you multiply t1 here, you'll get t1 square, and t1 and t2 will be multiplied, minus half into g t1 square. So this and this will get cancelled, minus 0 हो जाएगा. So what is the final answer बच्चा? तो g t1 t2 divided by 2. Look at the answer. Option D is the correct answer. Out of 30 votes, only 11 of you have got the correct answer. Guys, please click yes if you have understood this. चंगू मंगू, चिंटू पिंटू और रिंकी पिंकी, जल्दी से बताओ. Click yes if you have understood this. अच्छा, अब खुद से बताओ बच्चा. If you are going to solve this question for the first time, please be very, very honest with me right now. If you are going to solve this question for the first time, will you be able to solve this question within 2 minutes also? बच्चा एकदम बिल्कुल ऑनेस्टली बताना मुझे. ये क्वेश्चन अगर तुमसे पूछा गया, and if you are looking at this question for the first time, will you be able to solve this question within 2 minutes? Not even 90 seconds, within 2 minutes.
I think my answer, like your answer will be, most of you will say no, which most of you are saying this also. देखो बच्चा, प्रॉब्लम क्या है, हाउ कैन आई डील विद, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछा गया है एक्चुअली, दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. अच्छा, करते कैसे हैं, हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. बिकॉज ऑफ दिस होता क्या है बच्चा, इन काइनेमेटिक्स यू विल हैव सो मेनी वेराइटीज, बहुत वेराइटी मिलेगा, मल्टीपल लगेगा, वेरिएबल है. So for this chapter to be mastered, you need to practice a lot of questions. Pehla. And second, you should know how to take the variable out, how to identify the primary variable. Sometimes the asked question will be the primary variable, and rest all other things can be handled very, very easily. But in some of the questions like this, here our primary variable was height, but to get height there was something which is also very, very necessary, that u part. बात समझ में आ रही है? तो होता क्या है बच्चा लोग, आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि ऐसे क्वेश्चंस में एक्चुअल क्या चाहिए. मैंने क्या फिगर आउट किया, that if I need to get the value of AB, I should know the value of U at least, because all other variables, all other factors are not given to us. बात समझ में आई? क्लियर है सबको बच्चा लोग? अरे प्रशांत कैसे करोगे भाई, 2u/g करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही तो मैंने किया ना यहाँ पे, वो बताऊंगा ना मैं आपको. मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगाओगे, दैट इज करेक्ट, नो प्रॉब्लम, बट यू नीड टू फिगर आउट दैट मुझे u का वैल्यू चाहिए. When will you get to know that I need to get the value of u? कैसे मालूम चलेगा? And first of all प्रशांत, in this question how will you figure out कि यहाँ वाला टाइम कैसे तुम बताओगे कि ये कितने के बराबर है in terms of t1 and t2? Are you getting my point? प्रशांत, that will again create some kind of थोड़ा सा गड़बड़ सा काम, एक और वेरिएबल करना पड़ेगा to find what is the time taken from here to here. Otherwise हाफ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, हाफ कर सकते हो. सर यहाँ से यहाँ जाने में हाफ टाइम लगेगा, नो प्रॉब्लम. But the only thing is what? You should know how to find, what to find actually. करना क्या है मुझे बेसिकली. क्लियर है प्रतीश? सब कुछ सही है, मुझे पता है वो फॉर्मूला, मुझे कोई दिक्कत नहीं उसको यूज करने में, आगे भी मैं यूज करूंगा, बताऊंगा भी. द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, दैट यू शुड नो कि तुम्हें निकालना क्या. व्हाई विल यू फाइंड दिस? क्या भगवान का आशीर्वाद आएगा क्या भगवान की तरफ से आवाज आएगा, जा बस निकाल ले यू? तो आपको फिगर आउट करना है कि मुझे निकालना क्या है. हाँ, टू फाइंड दैट देयर माइट बी मल्टीपल वेज, और दैट इन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस दिस इज आल्सो वन ऑफ द वे. तो यू कैन एक्चुअली गेट दिस पार्ट फ्रॉम अ फॉर्मूला. वो फॉर्मूला क्या है? द टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल टू रीच द मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हमें पता है. क्या फॉर्मूला होता है चलो जल्दी से बता दो. टाइम टेकन to reach the maximum height. फॉर्मूला क्या है? प्रोजेक्टाइल का याद रख बच्चा, अलग अलग मत याद रखना. डोंट रिमेंबर दैट. प्रोजेक्टाइल का याद रख. क्या फॉर्मूला होता है? u sin theta by g. u sin theta by g, मैक्सिमम हाइट पे जाने का u sin theta by g. If it has been projected vertically upward, then in this case theta will become 90, so u by g. किसने बोला बे 2u by g? 2u by g में जाके आ जाएगा. क्या बात कर रहे हो बच्चा? मैं बोल रहा हूं मैक्सिमम हाइट पे जाने का कितना टाइम लगेगा. If you are saying 2u by g, then in this 2u by g the particle will go up and then come down again. What is the question? Time taken to reach the maximum height. हाँ, फुल जर्नी का क्या है? कॉपी करता हूं, इसको लिख देता हूं मैं आपको. To reach the ground again, what will you use as a formula? 2u sin theta by g, and when the particle will be projected vertically, theta will become 90, sin 90 will become 1, and you can have this formula 2u by g. And then you can actually compare. In this question you can simply compare. इसको मैं क्या करता हूँ, इधर लिखता हूँ, ठीक है. And then you can actually get this value of u और करके भी, no problem.
and then you can write 2u by g can be written as t1 plus t2 and u can be written as g by 2 into t1 plus t2. बट ये कौन बताएगा? भगवान आके तो नहीं बताएंगे ना मुझे u निकालना है. How will you get to know that I have to find u and then I have to put it here? तुम्हारा प्रैक्टिस होना चाहिए. Kinematics in one sense is very easy, but in other sense is very dangerous for the examination. Reason क्या है? You'll never know कि कितना time लग जाएगा. Because you'll be connected always. If you'll be trying to solve this question, तुम्हारा दिमाग हमेशा काम कर रहा होगा. Continuously you'll be thinking something. So you'll lose the track of time. So you might be spending 4 minutes to solve this single question. So you have to be very, very sincere and very, very serious about kinematics, that if you know exact approach, then attempt it. Otherwise, mark it for review for next round of attempt. Guys, are you getting my point? Agar kinematics mein, if you have practiced enough, then go for it, solve it within a minute or so. But if you think I don't know the approach properly, I don't know what I have to do exactly, I will come to this question in second round of attempt. I will not give this question 4 minutes of my total time so that it will take one extra question. It will cost me one other easier question. इस चीज का हमेशा एग्जामिनेशन में ध्यान रखना है आपको. But yes, if you have already solved this type of question, then you can solve it within a minute, no problem. तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा. Guys, please click yes if you have understood what I'm trying to say. First one is about the concept and second one is about the strategy in your examination while solving kinematics problem. And that too, this type of question. ठीक है? चलो, तो only 11 of you have got the correct answer out of 30 votes. Now let us move on to next question. ये है हमारा अगला सवाल. And I'll be giving you 90 seconds to solve this question. So you guys have 90 seconds to solve this question. Please solve this within 90 seconds. I know you can solve it with like before that also, but it's okay. चलो बच्चे जल्दी सॉल्व करो. You have 50 seconds left. Thirty seconds left. Twenty seconds. All right, time's up. चलो अच्छा, those who couldn't get the correct answer, please give it an attempt, but don't mark that as your response in the examination. I know few of you must be in between the solution. I'm giving you 10-15 extra seconds to you to give it an attempt, but don't consider that attempt as a response, ठीक है, to the answer or in the examination. Done? चल, अब मैं बताता हूँ, ठीक है. So only actually 43 of you have got the response. 43 of you have voted also. That's a good sign. I didn't expect these many responses for this question, but I'm happy for you. चलिए, तो कैसे solve करेंगे बच्चों लोग this question? So let's find out the answer for this. Okay. So I'm expecting most of you must have like जुगाड़ लगाया होगा, है ना? कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं, देख लीजिए. So here acceleration versus v is given to us. Acceleration versus v graph is given to us. I have to find v versus time. मतलब if I try to get a versus time, I can differentiate that part. I'll get v versus time, right? या फिर कुछ तो जुगाड़ लगेगा. First of all, let us take the help of this one.
From this information, from this graph, I can write that A must be equal to minus M into V plus some C. Guys, let me know if you have understood this. Can I write like this? A will be written as minus M into V plus C. Any problem here? I don't know what is the slope, but I know this for sure that slope will be negative. So minus M. The y-intercept here, the a-intercept here is what बच्चा? C. ठीक है? A-intercept क्या है बच्चा? C. तो मैंने क्या लिख दिया इधर? C. No problem. Guys, am I clear to all of you? समझ में आ रही बात? अरे मैंने बोला क्या ये स्लोप है? मैंने बोला ये कुछ तो कांस्टेंट है, आई डोंट नो. इट विल हैव समथिंग, कुछ तो होगा ना. यहाँ पे स्लोप क्या बताएगा? a by b बताएगा ना. a कैसे, किसने बोला तुम्हें कि ये डायमेंशनली रॉन्ग है? प्रणव, चेक इट प्रॉपरली. ठीक है, प्लीज चेक इट प्रॉपरली. m क्या होगा? स्लोप इन दिस वन, दैट विल a by v. तो v v कैंसिल, ये क्या हो जाएगा? a. c इज व्हाट? द a इंटरसेप्ट. नो प्रॉब्लम, डायमेंशनली करेक्ट ओनली. ऑलराइट, चलिए. तो ये मुझे मिल गया क्या बच्चा लोग? दिस इज व्हाट अबाउट द स्लोप. अच्छा, मतलब दिस इज अबाउट द रिलेशन. कैन आई राइट a एज dv by dt? And then can I write this dv divided by this term minus mv plus c is equal to dt? And then if I integrate this part, I will get, इसका integration क्या मिलेगा बच्चों को? Integration of this part, I might have taught you this also. 1 by ax plus b का integration क्या मिलता है? बोलो. I have taught you this. You must have studied integration and you must have solved thousands of questions in integration. Tell me what is integration of 1 by ax plus b? Correct. Ln ax plus b divided by a. Similarly, I will write this as ln minus mb plus c divided by minus m will be equal to d. Correct बच्चा? Clear है सबको? अब इसको क्या रेस्ट से शुरू हुआ है ना, तो लिमिट क्या हो जाएगा? 0 to d. ये क्या हो जाएगा? 0 to b. Put the limit, m उधर जाएगा, so I'll get ln minus mv plus c divided by ln c. No problem. Will be equal to minus mt. तो from this part I will get, ये ln क्यों लिख रहा हूं मैं? Directly c. ठीक है? So I'll get minus mv plus c divided by c will be equal to minus e to the power minus mt. This will give us a value of v as, so minus mv will be equal to c into e to the power minus mt. Correct है? Minus c, I'll get v will be equal to, divide कर दो, तो you'll get c by m minus c by m e to the power minus mt. So this is the equation that I'm getting. ये मिल रहा है ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है? करेक्ट है बच्चा लोग? चलिए, so now guys look at the options. Exponential graph, is it an exponential graph? No. Is it an exponential graph? No. Is it an exponential graph? No. बचा कौन सा? So what is the correct answer? Option D is the correct answer. And surprisingly, out of 43, 31 of you have got the correct answer. 31 of you have got the correct answer. चलो, अब इसको आसान और थोड़ा लॉजिकली कैसे सॉल्व करें? How can we solve this logically without going for this formal approach? Can some logic, can some kind of elimination method और कुछ logic हमारा काम आ सकता है क्या? Vishruti is saying something. Vishruti is saying A is always positive, sir. So V velocity is always increasing in positive direction. Okay. Vishnu is saying A is always positive, V is also positive. Speed is increasing in positive direction until the end, when A is 0 and B is constant. Okay. Correct है? No problem. That is true. That is true. Very good. चलेगा, बहुत बढ़िया. So option D will be the correct answer. No problem, Vishnu. That is correct.
एक्चुअली आई वुड हैव टोल्ड यू द सेम थिंग। देखो बच्चा, सिंपल सी बात है, तुमने थोड़ा सा कुछ चीजें मतलब खा गए लिखने में, बट एक्चुअली गॉट द पॉइंट। ए इज अप्रोचिंग जीरो बट नॉट जीरो, यहाँ जीरो है ना रे, एट दिस पॉइंट ए इज जीरो ना प्रणव, भांग का क्या है क्या? देखो बच्चे इधर, सो एक्सेलरेशन इन दिस वन, व्हाट इज एक्सेलरेशन? पॉजिटिव। व्हाट इज वेलोसिटी? पॉजिटिव। तो स्पीड क्या होगा? बढ़ेगा। तो वेलोसिटी इज पॉजिटिव, तो स्पीड विल इंक्रीज, तो वी विल हैव ग्रेटर वैल्यू ऑफ पॉजिटिव, लाइक पॉजिटिव वैल्यू, राइट? तो वी मस्ट इंक्रीज, तो वी बढ़ना चाहिए। बट इफ यू लुक एट दिस पॉइंट, इफ यू लुक एट दिस पॉइंट, यहां पे क्या है बच्चा? एक्सेलरेशन विल बिकम जीरो। ठीक है, इसके बाद का मेरे को मालूम नहीं, बट एक्सेलरेशन इज व्हाट? जीरो हियर। तो if acceleration is like this, after this what will happen? Acceleration is zero, that means velocity क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? velocity यहाँ पे हालांकि आपको देखना पड़ेगा आपको कि किस तरीके से आगे मोशन हुआ है, but at this point acceleration has what become zero. Okay, so हुआ क्या? velocity must increase, velocity must increase in positive direction. Will this be the correct answer? Answer is no, because here this means acceleration is constant, so this cannot be the answer. ठीक है, समझ में आ रही बात? अच्छा, व्हाट अबाउट दिस वन? व्हाट अबाउट दिस वन? दिस कैन नॉट बी द आंसर, बिकॉज ये क्या है? चलो बढ़ तो रहा है, बट दिस रिप्रेजेंट अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। वो पार्ट यहां से हमें, क्योंकि ये क्या बताएगा? चेंज ऑफ, ये क्या बता रहा है? चेंज ऑफ जो dy by dx का जो है ना, dv by dt का क्या बता रहा है? चेंज बता रहा है, रेट ऑफ चेंज का। d2v by dt स्क्वायर क्या? यहाँ पे जीरो मिलेगा। ये पार्ट तो यहाँ पे हमें करना नहीं है, ठीक है, वैसा कुछ मिला नहीं। सेकेंड पार्ट क्या? आर यू गेटिंग वेलोसिटी जीरो एवर? नहीं मिलेगा, बिकॉज स्पीड इज व्हाट? इंक्रीजिंग ऑलवेज। सो व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विद द रफ आइडिया यू वी आर हैविंग? ऑप्शन डी। तो वहां से भी आप क्या कर सकते हो? ऑप्शन डी को करेक्ट बोल सकते हो। ठीक है प्रणव, तू क्या भांग खा के सच्ची में आया क्या? मैं क्या बोल रहा हूं, तू क्या लिख रहा है? चलिए बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, आंसर मड़े। If position time graph of a particle is sine curve as shown, what will be its velocity time graph? You have 90 seconds to solve this. However, you can solve it before that also, but still I'm giving you 90 seconds to solve it. If position time graph is sine curve as shown, what will be its velocity time graph? जल्दी से आंसर कर दो। यो 8 seconds only, नहीं, बहुत कम क्वेश्चन हुआ बच्चा लोग। Come on guys, solve it fast. If position time graph of a particle is sine curve as shown, what will be its velocity time graph? What will be its velocity time graph? Forty seconds left. रितेश, आराम से बच्चा, गलत नहीं होना चाहिए। ये ग्राफ से टेंशन मत लेना, ये भी क्या है? सब साइन कॉस का है, ये मतलब इस तरीके का फॉर्म है। ठीक है, चलिए। सो गाइस 10 seconds लेफ्ट। यस दर्शन, करेक्ट। ऑल राइट, यस प्रतीश, बट नेगेटिव पॉजिटिव पे ध्यान देना पड़ेगा ना तुम्हें। देखो बच्चा, यहां से x, और दूसरा आप देख भी सकते हो साइन से भी, ठीक है। सो x विल बी रिटन एज, तो फ्यू ऑफ फ्यू क्या साइन का है, तो तुम सीधा लिख दोगे साइन सम ओमेगा इनटू टी। विल दैट बी करेक्ट? और विल दैट बी करेक्ट? नो। व्हाई? बिकॉज अब ग्राफ देख लो ना बच्चा, नेगेटिव साइन है बेसिकली ये। This is what negative sign, because क्या है? साइन का क्या है? माइनस साइन एक्स का कर्व है, माइनस साइन थीटा का कर्व। करेक्ट है? चलिए, तो if x is as a function of t is given to you, you have to get velocity as a function of time. So dx by dt will be v. What will you get? Differentiation of sin will be cos only. So cos omega t into omega, right? However, you'll have some like let's say यहाँ पे कुछ a भी तो मिलेगा ना, कुछ maximum value भी तो मिलेगा ना, x will be minus a into something. They'll get माइनस ए ओमेगा। ये तो SHM में पढ़ा होगा आप लोगों ने यार,
माइनस कॉस, दिस विल बी प्लस कॉस, दिस विल बी माइनस कॉस। ये तो साइन का कर्व हो गया। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी। तो 16 ऑफ यू हैव गॉट द करेक्ट आंसर आउट ऑफ 43। डी तो होगा नहीं यार। इफ यू डिफरेंशिएट साइन विल गेट कॉस, इफ यू गेट कॉस, ये कॉस में कैसे लिख दोगे यार? At t is equal to 0, if you put t is equal to 0 here, it will become what? Minus e omega. You're getting 0 here. How can you get that? तो पक्की बात है साइन का cos हो जाएगा, cos का sin हो जाएगा। ये तो like this is actually very simple that if it is cos sin it will become cos. So you can't have b or d. So those who have given b or d वो पूरा भांग के असर में आंसर किया, ठीक है? So option C is the correct answer. Only 16 of you have got the correct answer. Let us move on to next question. Answer this. Again 90 seconds for you. Come on guys, solve it fast. Xt graph of a particle moving along the straight line is shown in figure. The AT graph of the particle is correctly shown. AT का ग्राफ कैसा होगा? बहुत ही आसान बच्चों वाला सवाल है, इसमें गलती बर्दाश्त नहीं होगा। Few of you must be saying, sir क्या कर लोगे आप? चलो बच्चे जल्दी से आंसर करो। बिल्कुल बच्चों वाला है बच्चा। इफ यू रिमेंबर वन सिंपल कॉन्सेप्ट, एक्चुअली जब आपने पढ़ा होगा ना तो टीचर ने आपको बताया होगा। योर टीचर मस्ट हैव एक्चुअली गिवन यू दिस एज अ नोट कि इन एक्सटी ग्राफ इफ द कर्व इज अ पैराबोलिक देन in xt graph if you get a parabola then acceleration will be, this kind of statement must have been given by your mechanics teacher, physics teacher, क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूं तो देता ही देता। एग्जैक्टली खुशी, एग्जैक्टली चिन्मय। बट पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा ये तुम्हें कुछ एक छोटे से और बेसिक कॉन्सेप्ट से पता लगेगा। ऑलराइट, 7 seconds are left. Only 36 of you have answered. All right, time's up. कहानी खत्म। So 40 of you have answered और बहुत कम लोगों का करेक्ट आंसर है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि गोली मार दो इससे अच्छा मुझे। अरे भाई साहब तुमने क्या नहीं पढ़ा है? If in xt graph curve is a parabola, that means acceleration will be constant. If parabola is concave down, that means acceleration will be negative. अरे मतलब ऐसा, मैं तो ऐसा पढ़ाता हूं, कटोरा ऊपर एक्सेलरेशन पॉजिटिव। ये आपने पैराबोला के बारे में भी देखा होगा। सो कनकेव अप, कटोरा कुछ लोगों को समझ नहीं आएगा, कनकेव अप तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, कनकेव डाउन कैसे आता है वो भी बताता हूं, डोंट वरी। एक्सेलरेशन नेगेटिव। ओ भाई साहब पैराबोला कांस्टेंट, कनकेव डाउन तो नेगेटिव, अ नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन विल बी देयर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओनली 8 ऑफ यू हैव गॉट द करेक्ट आंसर आउट ऑफ 40 वोट्स। तो गाना आता है ना कुछ तो ऐसा, जोर का झटका है धीरे से लगा, जोरों से लगा। ये मतलब समझ नहीं आ रहा है जोर से लगा कि धीरे से लगा। अरे सिंपल है भैया, इफ यू आर हैविंग xt ग्राफ एज अ पैराबोला दैट मींस x मस्ट बी सम 80 स्क्वायर, मैं कुछ 80 स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सम c, ऐसा ही कुछ हुआ होगा ना। जनरल पैराबोलिक फॉर्म तो यही होता है ना। इफ यू डिफरेंशिएट इट ट्वाइस you will get acceleration and that will be equal to 2 into a into t, that's it. Not t 2 into a, simple 2 into a, isn't it? Now think about it. If it is a parabolic, if it is concave up, then a must be positive. If it will be a concave up, the parabola is concave up, then a must be positive. If a is positive, this acceleration will be positive. No problem, done. If the curve is a parabola down, concave down, then this a, the coefficient of t square must be negative. So if a, capital A is negative, that means this acceleration is negative.
ये तो मतलब पढ़ाया ही होगा यार, अगर ये याद नहीं है तो मतलब ऐसा टॉय गन लेने का, इधर लगाने का और हवाई फायर करने का, बिकॉज इधर भेजा है, थोड़ा सा तो है ना, ठीक है। मतलब सोच ले कि कुछ तो गड़बड़ किया है तुमने पढ़ाई के टाइम पे। ऑलराइट, चलिए, तो ऑप्शन डी वाज द करेक्ट आंसर। ओनली 8 ऑफ यू हैव गॉट द करेक्ट आंसर। गाइस प्लीज रिवाइज योर कॉन्सेप्ट्स, बेसिक्स एटलीस्ट प्रॉपर्ली, ओके। एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट वन, ठीक है, लास्ट वन करते हैं, ये कर लोगे, बट आई वांट यू टू सॉल्व एक मस्त सवाल, या सॉल्व दिस वन एंड देन यू कैन लीव। चलो बच्चे जल्दी से आंसर करो। Come on guys, solve question number 12. It's okay विष्णु, चलेगा रे, लिखा था ना उधर x वर्सेस t, कुछ तो लिखा था ना। Solve this one. This is very very simple question, but अच्छा है, मतलब सॉल्व करके लगेगा कि ये सारी गलती हम लोग करते हैं। These are the silly mistakes or common mistakes that can be committed by any one of us. प्रणव, can't you see? चश्मा लगा है क्या, पहना नहीं है तुमने? चलो बच्चा, पोल लॉन्च करता हूं। I'll give you 90 seconds again, Ray. I have given you extra 30 seconds, but still no problem. ये 2 मिनट में भी सॉल्व कर दो और करेक्ट आंसर मिल गया, I'll be happy. But don't guess, because within 10 seconds I have got 11 answers. इसका मतलब है कि वो बस तुक्का मार रहे हो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100, और you are googling this question, गूगल कर रहे हो and giving the answer. Please don't do that. $50 seconds are left. A particle is projected from a horizontal plane, xz plane, ठीक है, such that its velocity vector at time t is given by v is equal to this. Its range on the horizontal plane is given by this. तो बताइए रेंज का फॉर्मूला, रेंज का वैल्यू कौन सा मिलेगा इसमें? 30 seconds are left guys. Pratish, I can't tell you whether you're correct or not. अभी 30 सेकंड बचा हुआ है, राइट? चलो जल्दी आंसर करो फटाफट, एकदम चीते की स्पीड में। और एट दिस नो प्रॉब्लम, बट यू आर लकी, यू गॉट रॉन्ग आंसर। चलो टाइम्स अप, टाइम हो गया है। चलिए अब देखते हैं इसका आंसर और देखते हैं क्या गलत करते हैं हम लोग, ओके। ऑलराइट गाइस, सो वी हैव अ फॉर्मूला फॉर रेंज। रेंज का फॉर्मूला क्या है? चलो, तो रेंज का फॉर्मूला है 2u² sin 2 theta divided by g as the range formula, right? है ना? अच्छा, बहुत अच्छा सर। Can we write this as 2 into u sin theta into u cos theta into 2 divided by g? Can I write this? अरे प्रतीश, यही फॉर्मूला होता है ना? अच्छा, 2 नहीं होता है क्या? Are you sure 2 नहीं होता है? पक्का? अब तो ठीक है ना? तो u square sin 2 theta by g, I can write that part as, ठीक है, I can write that part as 2u sin theta into u cos theta by g. ठीक है, नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया। अरे प्रणव, डोंट कंफ्यूज, वो और गलत तो बता रहा है। 2 नीचे आता है मैक्सिमम हाइट में, ऊपर नहीं आता है, ठीक है। चलिए, ये पार्ट हमारा हो गया फॉर्मूला। ऑलराइट, वी हैव वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ दिस। कैन आई राइट वेलोसिटी इज गिवन टू अस एज, v is given to us as vxi cap plus vj cap, है ना? I can write this as v
cos theta I cap plus b sin theta j cap. Can write like that, no problem. For u, I'll put the value of t as 0. I'll put the value of t as 0. I'll get the value of u. So u cos theta क्या मिलेगा बच्चा? Put the value of t here. You'll get u cos theta is what बच्चा लोग? U cos theta is nothing but a. What about u sin theta? Put the value of t0 here. You will get b. So should I put the values here? You'll say yes, put कर. What about g बच्चा? तो एक थोड़ा सा मिस्टेक है. This formula is correct if projectile is under gravity. This formula is correct if particle is under force due to gravity. If acceleration is acceleration due to gravity. But from this particular velocity term, if I try to differentiate this, if I differentiate Vy, I will get minus C. That means the acceleration in a downward direction, in vertical direction is not G but C. तो मतलब क्या है बच्चा? ये G जो है vertical direction में जो acceleration है, I can write this as Ay also because we used Ay as G, right? So and that Ay will be what? C part. Negative sign direction बताता है, right? चलिए. So if I put all the values, I'll get 2 u sin theta is v, u cos theta is a, and divide by g is what? 2 bi into c. So option B is the correct answer. अब बच्चा लोग please click yes if you have understood this question. प्रतीश मुझे मालूम है. ठीक है? So only 13 of you have got the correct answer out of 32 votes. Well done, guys. Keep it up. Thank you so much for attending the class. And I hope you have understood some of the concepts from kinematics. However, there were other questions also that are left. We'll come to those questions later. Okay. So thank you, bachcha log. Thank you for attending the class. Stay safe, stay healthy, and have a nice day. Bye bye. Take care. Enjoy, Madi. Okay. And